स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। मैम। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फाइनस देखे थे, राइट? एक्सटर्नल फीचर्स हमने पढ़े थे. So the plant body is sporophyte and it is a evergreen tall tree. Pinus जो है वो evergreen tall tree है. Plant body is divided into root, stem and leaves. Stem यहाँ पे जो plant है वो किस में divide हो रहा है? Leaves, stem. The main trunk is unbranched. दो टाइप के ब्रांचेस देखे हमने. दो टाइप के लीव्स होते हैं, है ना? शॉर्ट डॉट शूट और अ लॉन्ग शूट. देन लीव्स में भी दो टाइप देखे. स्केली लीव्स है, foliage leaves है ना? It has a branches confined to a apical region and these branches form a characteristic canopy. So it is covered with a scaly bark. Scaly bark से वो cover होता है and its branches are dimorphic. Dimorphic branches होते हैं. You can see in the picture also. यहाँ पे लॉन्ग शूट भी है, डॉर्क शूट भी है और जो लीव्स है वो नीडल लाइक है, राइट? नेक्स्ट इज अ ब्रांचेस ऑफ unlimited growth. So the main branches have a an unlimited growth. Main branches means unlimited growth मतलब क्या? Main branches जो है वो have a unlimited growth and they bear only scaly leaves. Unlimited growth पे scaly leaves ही grow होंगे. Then branches of limited growth पे branches of limited growth, or we can say the dwarf branches, are produced in the exile of the scaly leaves. कहाँ पे arise हो रहे हैं, कहाँ पे grow हो रहे हैं? Exile of the scaly leaves of the main branch, main branches पे. These are about 1 to 2 centimeter long. Okay, उसकी length कितनी होती है? Long कितने होते हैं वो? 1 to 2 centimeter long. These are covered by 1 or 2 scale leaves. So these branches also bear a foliage leaves. और भी scaly leaves के साथ में foliage leaves भी bear कर रहा है वो. A dwarf shoot with its foliage leaves is called as fir. Next is a leaf. So pinus have a two type of leaves. ये मेन पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना है कि दो टाइप के लीव्स प्रेजेंट होते हैं पाइनस में. सो द स्केली लीव्स एंड नेक्स्ट इज अ foliage leaves. So scaly leaves means scale leaves. The scale leaves are small. Small होते हैं, membranous and brownish in color. Scale leaves जो होंगे वो brownish color में होते हैं. These are protective in function. They are present on the main and a dwarf shoot. So scale leaves जो है वो dwarf shoot पे present होते हैं. Okay. और dwarf means limited growth or unlimited. Limited growth. Branches of limited growth means dwarf branches, और dwarf branches पे scale leaves present रहते हैं. Next is the foliage leaves. So the foliage leaves are green and needle like. Foliage जो है वो needle like appearance होता है उसका. So they are found only on the dwarf shoot forming the spur. Next is a root. Root of pinus has a well developed tap root. Well developed tap root system होता है pinus में. It main short, uh, it remains short and grow on a hard ground on or a rock. Rock पे भी होता है, hard grounds पे grow होता है. So the lateral roots are well developed. These roots spread over a large area. Large area में वो spread हो जाता है. So the young roots are infested with a fungus to form a mycorrhiza. Okay, so this is the external morphology, or we can say the general structure of pinus. Next is a TS of stem of pinus. नोट्स में भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बाद नेक्स्ट जो है वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है. इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम लोग कैसे देखते हैं? पहले हम टीएस ऑफ यंग स्टेम देखेंगे, नेक्स्ट टीएस ऑफ ओल्ड स्टेम देखेंगे. पहले यंग स्टेम देखना है, नेक्स्ट इज द ओल्ड स्टेम, देन उसके बाद टीएस ऑफ यंग रूट है, देन लीफ है. तो हम एक एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है. ओके, तो फर्स्ट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यंग स्टेम. यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं.
TS of young stem of pinus. ओके, तो एक्सटर्नली क्या प्रेजेंट होता है? A young pinus stem show three distinct region present होते हैं young stem में. Internal structure of young stem में three regions होंगे. What are they? First region. What is the name of the first region? Anyone knows? Externally क्या present है? बेसिकली हम थ्री रीजन्स पढ़ते हैं ना इंटरनली. कौन से तीन रीजन्स होते हैं? यस. एपिडर्मिस, यस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एंड पिथ. लास्ट पीथ. ओके, तो यहाँ पे पीथ नहीं है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्टीले. पीथ नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि स्टीले में सब आ जाएगा. तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टीले. ओके, तो यंग पाइनस स्टेम shows the three distinct regions. Externally epidermis. तो epidermis की स्ट्रक्चर देखो कैसा है वहां पे. इट इज इरेग्युलर शेप में, रेगुलर नहीं है. इन आउटलाइन एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर. वहां पे डबल लेयर नहीं प्रेजेंट है, ओनली सिंगल प्रेजेंट है. सिंगल लेयर इज प्रेजेंट. और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विथ थिक क्यूटिकल. मीन्स वहाँ पे थिक क्यूटिकल से वो कवर होता है. आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस पे. इट इज कॉल्ड एज अ क्यूटिकल. सो इट इज इरेग्युलर इन आउटलाइन एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विथ थिक क्यूटिकल. ओके, the surface is covered by an epidermis and it is consist of a single layer of cells. Outer wall of these cells are highly cutinized. मतलब वहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट है आउटर वॉल पे. बिलो द epidermis it is a hypodermis which is form of a layer of lignified cells. मतलब epidermis के बाद कौन सी लेयर है? आफ्टर द epidermis hypodermis is present which is form of layer of lignified cells. वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है एपिडर्मिस के बाद वो लिग्निफाइड सेल्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अ कॉर्टेक्स. तो कॉर्टेक्स इट इज अ फ्यू लेयर इन थिकनेस. कुछ लेयर है कॉर्टेक्स के थिकनेस होते हैं. इट इज फ्यू लेयर इन थिकनेस. इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एंड इनर कॉर्टेक्स. दो टाइप के कॉर्टेक्स प्रेजेंट है वहाँ पे. आउटर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स. तो द आउटर कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ अ 2 to 3 लेयर. ओके, जो आउटर कॉर्टेक्स है वो उसके कितने लेयर होंगे? एटलीस्ट 2 to 3 लेयर ऑफ outer cortex layer, and it is made up of scleral camatous cell forming a hypodermis. Okay, next is the inner cortex. अब outer cortex जो है वो किस पे मेडअप कर रहा है? स्क्लेरन कैमाटस सेल्स पे. Okay, and inner cortex is a thin wall and it is made up of parenchymatous within resin ducts. यानी वहाँ पे जो inner cortex है वो किस पे मेडअप किया है? parenchymatous cells पे. साथ में क्या है उसके? resin ducts is present also in inner cortex. Okay, clear a point? The innermost layer of cortex is endodermis, which separates the cortex from a stele. जो इनर मोस्ट लेयर होंगी कॉर्टेक्स की जो क्या है? एंडोडर्मिस है. वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस विच सेपरेट्स द कॉर्टेक्स फ्रॉम अ. वो कॉर्टेक्स को कहाँ से सेपरेट कर रहा है? स्टीले से सेपरेट करता है. कौन सा कॉर्टेक्स स्टीले से सेपरेट कर रहा है? वहां पे कॉर्टेक्स स्टीले से इनर कॉर्टेक्स सेपरेट करेगा. ओके, the outer cortex consists of a 2 to 3 layer of sclerenchymatous cell forming a hypodermis. Inner cortex is thin wall parenchymatous with resin ducts, and the innermost layer of cortex is endodermis, which separate the cortex from the stele. यानी हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स प्रेजेंट है. आउटर कॉर्टेक्स के पास क्या है? हाइपोडर्मिस. और यहाँ पे इनर के लिए एंडोडर्मिस होगा. ओके, so the cortex is formed of parenchymatous cell. Cortex has a large number of resin canals
जैसे मैंने बोली यहाँ पे रेजिन डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं इनर कॉर्टेक्स में. सो ईच रेजिन कैनाल्स इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ रेजिन secreting glandular epithelial cell. Okay. Next is the vascular bundle. So the vascular bundle are conjoined, collateral and open. Vascular bundles जो होते हैं वो conjoined भी होते हैं, collateral है and open. So they form a ring around the pit. रिंग फॉर्म कर रहा है वो पिट के अराउंड में. यू कैन सी इन द पिक्चर वहां पे एक रिंग फॉर्म भी है अराउंड द पिट. सो they forming a ring around the pit in each vascular bundle. The xylem is toward the inner side and phloem toward the outer side. आउटर साइड में फ्लोएम प्रेजेंट है, जाइलम जो है वो इनर साइड में प्रेजेंट होता है. मतलब जाइलम को कौन कवर कर रहा है? फ्लोएम. ओके. फ्लोएम इज कवर्ड द xylem. So they form in each side of in each vascular bundle, the xylem is toward the inner side and phloem toward the outer side. A narrow strip of cambium is present between xylem and phloem. एक कैम्बियम रिंग जो है वो स्ट्रिप जो है वो प्रेजेंट रहती है किसके बीच में? झाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा? कैम्बियम रिंग. कंफ्यूज नहीं होना है. इनर साइड में क्या प्रेजेंट है? xylem. आउटर साइड में क्या प्रेजेंट है? phloem. And between xylem and phloem, what is present? Cambium ring. A narrow strips of cambium is present between the xylem and phloem. Pericycle is present outer to the ring of vascular bundle. A single layer thin wall endodermis is present outside the pericycle. Okay. तो सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग. जब वहां पे एक्टिविटी होगी कैम्बियम रिंग की तो वहां पे क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ इज टेक प्लेस. सो देर आर डिस्टिंक्ट एनुअल ग्रोथ रिंग इन द वुड. ओके. एंड स्टीले इज अ Siphonostele. यहाँ पे सिफोनोस्टेली होंगी. Means the stele is siphonostele, the outermost layer of stele in pericycle. The vascular bundle are arranged in a single form. Single form में वहाँ पे vascular bundle arrange होता है. Pith is present at the center. Center में pith present है. And vascular bundle are arranged in a ring. Ring के form में वहाँ पे vascular bundle arrange है and are conjoined collateral and open with endarch. Okay. समझ में आया सबको? टीएस ऑफ यंग स्टेम क्या क्या देखे हमने? Yes, ma'am. इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टीले एंड वेस्कुलर बंडल एंड पिथ. तो यहाँ पे 5 चीजें प्रेजेंट है. वन इज एपिडर्मिस जो आउटर वॉल है, आउटर कवरिंग होंगी. इनसाइड दिस कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट. कॉर्टेक्स में भी there are two types of cortex, outer cortex and inner cortex. So outer cortex is made up of sclerenchymatous cells. Okay. And inner cortex is made up of parenchymatous cells. And parenchymatous cell के साथ में वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? resin ducts. Next is a stele. The stele is phonostele type and vascular bundle. तो वहाँ पे vascular bundle कैसा होगा? Arranged in ring and are conjoined collateral and open with endarch. And last is a pith. So it is present at the center of consist of parenchymatous cell. Okay. So this is TS of young stem. सबको समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay.